Shadab Khan and Salman Ali Agha have started the PSL on an explosive note. Welcome to the shiny side. मैं हूं आपका होस्ट फरीस और मेरे साथ आज मौजूद हैं बहरीन से इमरान असलम। इमरान, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहला मैच PSL इज फाइनली अंडरवे, कब से हम उसकी बात कर रहे हैं, एंड क्वाइट एक्सप्लोसिव स्टार्ट। Good, exciting match to start with. I would have hated KPS to start with a one-sided match. So I think it was a good match, high-scoring game, and a really, really good chase by Islamabad United. So yeah, the tournament is off to a good start. And it looked like it's. अगर आप scorecard end में से देखें, आपको शायद लगे थोड़ा one-sided सा game था. But till about 5 or 6 overs to go, it was still very much in the balance, right? And a wicket here or two could easily have tilted the game. So I guess अगर हम टॉस से शुरू करें इमरान, so I mean थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लें तो पिछले 5 मैचेस जो हैं लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में, वो लाहौर जीता है। तो इस्लामाबाद के पास थोड़ा प्रेशर था उनके पास फाइनली विनिंग अ गेम। उसके अलावा लाहौर में पिछले सीजन में आई थिंक 90% मैचेस वन बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट। सो आई थिंक अगर हम टॉस पे जाएं तो इस्लामाबाद का जो डिसीजन था टू चेज, व्हाइल आई नो T20 में जनरली और इस्लामाबाद खासतौर पे प्रेफर करते हैं, हाउ डू यू लुक एट द डिसीजन टू चेज? I think it was an interesting decision going against history, like you said. Like I think Islamabad, they thought that they back their strength. They have backed their batting line of power hitters all across. So they thought they'd back their strength, and they looks like they back themselves to chase whatever they're given. जहाँ पर इस्लामाबाद का ताल्लुक है, उनकी एक चेंज जो उन्होंने अपनी टीम में किया है थोड़ा रिसेंट, वो है कि हैदर अली पिछले हफ्ते इंक्लूड हो गए उनकी 11 में बिकॉज ऑफ सम फॉरेन प्लेयर ड्रॉपिंग आउट। सो वी स्पोक अबाउट lack of a reliable top order. I'm not sure if I will call Hyder Ali lack a reliable or top order, लेकिन वो एक एडिशन डेफिनेटली है जो उनकी टीम में है। कल उनका खैर नौबत नहीं आया बैटिंग करने की, बट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट प्लेज आउट। सो 11 में जहां तक ताल्लुक है, हैदर अली आए। उसके अलावा अनदर इंटरेस्टिंग वाज उन्होंने उबैद शाह को खिलाया जो नसीम शाह के अंडर 19 वाले भाई हैं, लेकिन उन्होंने हुनैन शाह को नहीं खिलाया जो मिडिल वाले बीच वाले भाई हैं, पिछले साल अंडर 19 खेले में, और रुमान रईस को भी नहीं खिलाया। सो टिमाल मिल्स, उबैद शाह and Naseem Shah played while Hunain and Roman Rice sat out. How did you see that selection choice? So I think interesting कि bringing Ubaid Shah straight into it. अभी ठीक है, he had a good under 19 tournament, लेकिन I think I would prefer कि उसको थोड़ा सा ease into it किया जाए rather than कि पहले मैच में उसको straight up ले आए। ठीक है, he had again a very good under 19, लेकिन still inexperienced young kid. So I was a bit surprised कि पहले मैच से उन्होंने उसको ले आए, and then the way they handled him also, उसको एक ओवर 15 रन पड़ गया, उसके बाद उसको वापस नहीं लेके आए। सो ये जब मैंने I agree, मुझे काफी बात हैरानी लगी पर बाद में मैं इधर उधर सर्च इन्फॉर्मेशन देख रहा था, कहीं इंजर्ड तो नहीं हुआ है, बट ही वाजंट इंजर्ड, ही वाज फाइन। पर उसको एक और ओवर ना देना उसके कॉन्फिडेंस के लिए, पर वैसे भी आपकी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडंट मेक एनी सेंस टू मी। बिल्कुल I was very surprised to see that कि उसको एक ओवर दिया, उसके बाद उसको वापस नहीं लेके आए थ्रू आउट द इनिंग्स। आई थिंक जहां तक हम लाहौर की 11 देखें तो वहां पे उन्होंने शाय होप की जगह ये आयरिश टकर जो है विकेट कीपर, उनको खिलाया, और उनकी भी खैर कल बैटिंग तो नहीं आई। सिकंदर रजा बाय द वे, हु सो अगेन राशिद खान तो है ही नहीं स्क्वाड में, बट सिकंदर रजा जो है वो IL T20 का कल फाइनल खेल रहे थे, तो ही इज प्रॉब्ली विल बी जॉइनिंग द लाहौर स्क्वाड इन द नेक्स्ट डे और सो आई गेस वंस ही कम्स इन ही विल कम स्ट्रेट इनटू द 11। अगर हम उसके अलावा मैच की जरा शुरू में जाके देखें तो आई थिंक साहबजादा फरहान, नाउ ही इज बीन टॉप स्कोरर इन द नेशनल T20 लास्ट ईयर। He's generally been around this picture for a while, बल्कि पाकिस्तान स्क्वाड में भी थे वो न्यूजीलैंड में। He actually played quite well. 57 of 36 उन्होंने स्कोर किया, 67 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया लाहौर को फखर के साथ उन्होंने, and फखर was the one who was kind of taking it easy and साहबजादा was going for it. How did you rate his knock? I think साहबजादा played a very good knock, definitely बहुत अच्छा knock खेला है साहबजादा, लेकिन फखर still seems to be struggling to get back to his best form. अगर आप थोड़ा सा स्कोर की एवोल्यूशन देखें तो आई थिंक लाहौर ने पहले 7 ओवर्स में दे वर अबाउट 70 और उससे नेक्स्ट 7 ओवर स्टेंट में दे ओनली गॉट 49 50 रन्स, और सो दैट इज आई थिंक एक तो 7 एंड 14 जहां पे उन्होंने सिर्फ 50 रन बनाए हैं। और कंपेयर करें उसी फेज को अगर आप इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद ने उसी फेज में अबाउट 70 रन बनाए, and at that point at the 15 over mark Islamabad on the neck and neck run rate was well ahead of Lahore overall comparison, and उसके बाद they continued there. So I think ये फखर की जो form और lack of form है, that can be a key concern for Lahore going forward. I think फखर का ज्यादा ताल्लुक है, I feel like I expect him to come good, but I think अगर साहब ज्यादा भी अब इस फॉर्म में आ गए हैं, so I think it's good for Lahore's top order.
Okay. आपने बड़ा अच्छा वैसे मिड ओवर्स का पॉइंट रेस किया इमरान। उसके दो फैक्टर्स थे, वैन डे डसन एंड शादाब खान। सो वैन डे डसन जो है, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, बट ही इज अ बिट ऑफ मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल प्लेयर जो थोड़ा वो स्टार्ट स्लो करते हैं। सो आई थिंक ही वाज बैटिंग इन दैट अर्ली Hmm. फेज। सेकंडली आई थिंक बट इन्होंने अपनी क्लास दिखाई है, खैर ही वाज अ टॉप स्कोरर 74-41, so you can't complain there. But Shadab Khan, after a very long time, looked like he Yeah. had some good control with the ball. And he managed to keep things a little bit tight, which was very, very good to see. अब शादाब खान की कोई बड़ा, अब खैर Hmm. बैटिंग पे हम उनकी बाद में आएंगे, डिस्कशन हो रहा है कि क्या उनकी फॉर्म वापस आ गई है, या कोई लोग कह रहे थे T20 में तो उनकी फॉर्म शायद गई नहीं थी, वो ओडीआई में स्ट्रगल कर रहे थे। हाउ डू यू सी दैट? No, I think it's very good to see that Shadab had a good spell, both from bowling and batting point of view. And I think एक तो इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छा साइन है, because I think Islamabad is a team which will rely on Shadab and his confidence, and they will rely on him to lift the team up. And obviously, from a bigger picture perspective, Pakistan के prospects के लिए we definitely need बिल्कुल। firing and informed Shadab Khan for the T20 World Cup. So it's very encouraging to see this yesterday. एंड आई थिंक अगर हम सेकंड इनिंग में आए तो आई थिंक शाहीन स्टार्टेड वेल, विच फ्रॉम अ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू जी वाज गुड टू सी। आई थिंक उनकी पेस भी सही थी, उन्होंने Hmm. पहले दो ओवर में से 6 रन दिए। जमान ऑन दी अदर हैंड जो है, खैर उनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो मेरे हिसाब से बॉलिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। उनको हमने 2-3 ओवर शुरू में ही करवा दिए, एंड वहां पे वो Hmm. हेल्स वगैरह ने उनको बिल्कुल भी जहां भी थोड़ा सा उन्होंने लाइन और लेंथ उनकी ऑफ थी, उन्होंने काफी उनको पनिश किया। हाउ डिड यू सी द ओपनिंग बॉलिंग एफर्ट फ्रॉम लाहौर? तो again, like you said, good to see Shaheen in form. लेकिन I think लाहौर का अब ये एक challenge है कि जमान खान and Haris Rauf both are meant to be back end bowlers, so they have a bit of a challenge कि ये open किससे करवाएं. So maybe the next match, maybe there's a case for trying a spinner up front with Shaheen or something different. Because obviously Zaman and Haris Rauf, I don't think इनको पहले 4-5 overs में bowling देना चाहिए. बिल्कुल। बट आई थिंक कल के मैच की जो मेन स्टोरी है वो है शादाब खान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप। आई थिंक व्हेन दे केम इनटू बैट, दे वर अबाउट व्हाट, दे वर 62 फॉर 2 पे वो आए थे, उन्होंने 70 बॉल में बिल्कुल. 138 स्कोर किया। एंड अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो you will probably start with talking about Shadab, but as somebody who's watching the match live, I want to start talking with Agha Salman, because he was the one who was kind of dominating and taking on the bowlers early on in the partnership. उन्होंने आते ही जो थोड़ा बहुत प्रेशर था, उन्होंने कुछ बड़े ओवर्स खेल के उसको रिलीज किया, and he was playing shots across, and he's not known to be a guy जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट उन्होंने पेस को भी काफी अच्छा खेला। बिल्कुल. और उन्होंने काफी, जहां भी थोड़ी सी लाइन थोड़ी सी ऑफ हुई, लेंथ ऑफ हुई, उन्होंने काफी उसको पनिश किया। अ फ्यू गुड बाउंड्रीज ऑन द लेग साइड, फ्लिक्स वगैरह किए उन्होंने। एक वो बड़ा अच्छा मैजिस्टिक शॉट खेलते हैं ऑफ साइड के ऊपर से उठाते हैं, वो भी खेला उन्होंने। सो आगा सलमान एंड अगेन शादाब ने अपने आप को प्रमोट किया कल नंबर 3 पे, वो नॉर्मली 4 पे बैट करते हैं। Hmm. बट अगेन हमने बात की थी कि इस्लामाबाद के पास शायद कोई एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की शॉर्टेज है। वी सॉ 2 गाइज हु वी डिडंट थिंक जो टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, दोनों ने टॉप ऑर्डर में आके खेला, एंड दोनों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी कल। Definitely. I think for me, Agha Salman's innings is the innings of the match. The way he just came in and got it going. And Joe, he has a grace and class about him. And it's really good to see him playing. And बिल्कुल। I think थोड़ा सा beyond his, or not in his normal mold, the way he batted with this aggression. Or definitely Shadab की तरफ से bold move to promote himself up to number 3 in the very first game, chasing a high total. But it definitely paid off. तो अगर ये दोनों चलते रहेंगे इसी फॉर्म में, तो दैट्स ऑब्वियसली अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर इस्लामाबाद। और जो हमें लगता था कि इनकी बैटिंग में एक स्टेबिलिटी की कमी है, वो आई थिंक यहाँ से पूरी हो सकती है। एंड दे बैट वेरी डीप विद. एंड अभी हैदर अली एंड आजम खान वर येट टू कम बिफोर वी इवन गेट टू माज वसीम एंड फहीम बिल्कुल. अशरफ। एग्जैक्टली. तो दे इनकी मतलब नंबर 8 तक इनके पास अच्छी स्ट्रांग बैटिंग है. सो अगर बीच में इनको सॉलिडिटी मिल जाती है, तो दे कैन डेफिनेटली बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स. तो पोस्ट मैच में आगा सलमान से जैनब ने पूछा कि जी आपने जिक्र किया था अपेरेंटली पब्लिकली कि आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलने का शौक है। ही सेड बिकॉज़ आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरा जो स्टाइल है, मुझे आई फिट वेरी वेल इन दिस टीम, राइट? एंड आई थिंक आई जस्ट रियलाइज यस्टरडे कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए T20 नहीं खेला है। हम एक आध साल से उनको रेगुलरली ओडीआईज और टेस्ट मैचेस में देख रहे हैं, बट इज येट टू प्ले फॉर पाकिस्तान इन T20। हमने पूरी सिलेक्शन एपिसोड कर ली, शायद आगा सलमान का नाम भी नहीं लिया हमने उसमें। बट आई थिंक आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस, अगर ऐसी परफॉर्मेंस चलती रही, बिकॉज इवन द टॉप ऑर्डर में हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं, हमारे पास मिडिल टू लो ऑर्डर में इतने ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल. तो आई फील लाइक ही इज समबडी हु कुड बी अ 5 और अ 6 कैंडिडेट आल्सो इन द पाकिस्तान स्क्वाड। बिल्कुल. सो बट एनीवे बिल्कुल. आई ही थिंक कुड बी. from the tournament's point of view, I think that Lahore has won the last two, I think it was very good to see Islamabad dominate and come out on top.
because Islamabad ka lately hasn't been doing so well in the PSL, so I बिल्कुल. think it'll be good for the league. And I think there's one last point शाहीन से जिससे भी किसने भी इंटरव्यू किया वो पहला सवाल राशिद खान पे आ रहा था. आई थिंक एक और चीज ध्यान में रखनी जरूरी है. राशिद खान हम्म. ऑब्वियसली इज अ क्लास प्लेयर एंड वो कभी रिप्लेस नहीं करेंगे, लेकिन सिकंदर रजा also provides some good control with the ball. And Sikandar Raza will probably be back for them in the next couple of days. So I feel like while it won't fill the Rashid Khan void, middle overs की थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम जो है वो हैंडल. और राशिद खान इज वेरी सॉरी सिकंदर रजा काफी फ्लैट बॉलिंग करते हैं, विकेट टू विकेट करते हैं, तो एक आध ओवर आपको पावर प्ले में भी दे सकते हैं इवन दो वो ऑफ स्पिनर हैं. हम्म. So that would also be interesting हम्म. to see how Shaheen uses him when he's back. हाँ, डेफिनेटली सिकंदर रजा विल बी अ बिग एडिशन फॉर लाहौर. डेफिनेटली होगा वो. बट आई थिंक इस वक्त लाहौर का जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और नॉट सिर्फ लाहौर का, वो एक पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम है, वो हारिस रऊफ की फॉर्म है. Hmm. थ्रू आउट आपने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा है हारिस रऊफ को किस तरह हेविली कंसीडिंग रन, एंड यस्टरडे अगेन वी सॉ हिम 3 overs for 38. तो ये एक बहुत मेजर चैलेंज है और इशू है इस वक्त, बोथ फॉर लाहौर एंड फॉर पाकिस्तान, फॉर Yeah. हारिस रऊफ टू somehow get back into form. और हमने हारिस पीसीबी ने 2 दिन पहले अनाउंस किया कि जी हारिस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने. सो बिकॉज ऑफ हिम बिल्कुल. पुलिंग आउट दिस. सो अगेन एज ऑलवेज पीसीबी मिस इन माय व्यू मिस हैंडलिंग कर रहे हैं, चीजों को मिस हैंडल कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जिस बंदे ने कभी 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले उसको आप टेस्ट मैच खिलवाने को कह रहे हैं, और जब वो नहीं खेल रहा तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो व्हाइट बॉल बेसिस पे आपने दिया हुआ है इसको आप कैंसिल कर रहे हैं. एनीवे, बिल्कुल. बिल्कुल. आई गेस आज 2 और मैचेस हैं. सो एक्शन पैक्ड संडे कमिंग अप फॉर पीएसएल फैंस. पहला जो मैच है वो 2 बजे पाकिस्तान शुरू होगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पेशावर जल्मी. एक जमाने में ये पहले कुछ सीजन में पीएसएल का सबसे बड़ा मैच होने लगा था ये, दीज वर द 2 टॉप परफॉर्मिंग साइड्स. लेटली इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप की है. दोनों टीम्स आर लुकिंग गुड फॉर डिफरेंट रीजंस. ये लाइकली 11 वही हैं जो हमने अपने प्रीव्यूज में डिस्कस की थी इनकी. अगेन आई थिंक कोटा ग्लैडिएटर्स ने काफी ओवरऑल किया है, उनकी टीम काफी स्ट्रांग लग रही है. उमर यूसुफ जिनको आप नहीं पहचानते होंगे शायद कुछ हमारे देखने वाले, उन्होंने लास्ट ईयर 120 बनाए थे 80 बॉलों में. सो अगेन ही इज अ सीजन्ड प्रोफेशनल टू समवॉट. साउथ शकील इज इन देयर आफ्टर आगे अब साउथ शकील जो हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं ओडीआई और टेस्ट मैच की वजह से. ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो टी20 में कैसे खेलेंगे. एंड सरफराज अहमद नॉट प्लेइंग एज कैप्टन, वो हाउ विल ही डू and where will he bat if he's in the side? So Imran, how do you see Quetta lining up? आई थिंक कोयटा हैज अ बिट ऑफ अ चैलेंज दिस टाइम. काफी डिफरेंट लाइनअप है, डिफरेंट प्लेयर्स हैं. रूसो कैप्टनसी में आते हैं, सरफराज को किस तरह हैंडल करते हैं, विल ऑल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच. लेकिन आई थिंक एटलीस्ट आज के मैच के लिए आई सी पेशावर लुकिंग एज द मच स्ट्रॉन्गर टीम, विद उनकी बैटिंग टॉप 3 टॉप 4 इनके पास, फिर बॉलिंग भी इनकी अच्छी स्ट्रॉन्ग है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ गुड गेम फॉर पेशावर. आई मीन अगर आप पेशावर की टीम देखें तो उनके टॉप 6 में हसीबुल्ला के अलावा बाकी जो 5 लोग 6 लोग 5 लोग हैं वो आइडियल हैं अपनी स्पॉट्स के लिए, एक से एक. सो आई थिंक दैट वे इट्स वेरी बिल्कुल. वेल रोल डिफाइंड काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप कि हर किसी का जिस रोल पे होना चाहिए उसी रोल पे मौजूद है. उनकी बॉलिंग के थोड़े मुझे डाउट्स हैं. आई मीन लुक वुड जो है वो इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे कुछ टी20, गुड लेफ्ट आर्म क्विक बट नॉट इज नॉट एक्सेप्शनल. सलाम खेले थे अफगानिस्तान के, वो मिस्ट्री स्पिनर हैं बट अभी तक हमने उनको देखा नहीं है. सो वी डोंट नो व्हाट हाउ गुड ही विल बी. शिवार जोसेफ आई होप इज अवेलेबल ऑलरेडी, जो अभी वेस्ट इंडीज के नए बॉलर आए हैं, बट उनका भी टी20 एक्सपीरियंस थोड़ा कम है. आमिर जमाल आई थिंक इज इन द न्यूज फॉर स्ट्रेस एक्सप्लॉइट्स, वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहते हैं, थोड़े विकेट्स भी लेते हैं. सो आई थिंक पेशावर का चैलेंज वही होगा जो आपने जिक्र किया था कि क्या ये शायद वो टीम है जो प्रेफर करेगी 200 चेस करना बजाय 200 डिफेंड करना. बिल्कुल. यस, डेफिनेटली. Uh, बैटिंग इनके I पास would डेफिनेटली probably है हाई स्कोर चेज करने. I would probably slightly differ with you, and I think Quetta perhaps is a more well-rounded team. So I would probably put my money on Quetta. So let's see how this plays out. उसके अलावा आज एक और भी मैच है इमरान, मुल्तान वर्सेस कराची. So I'm just putting up the likely 11s. I think like you mentioned on the preview, कराची ने भी preview किया, overhaul किया, but उनकी टीम कुछ ज़्यादा strong लग नहीं रही है. So I feel like in spite of the changes at Multan, I feel like Multan should be favorite. What's your take on this? हाँ, आई थिंक डेफिनेटली इस मैच के लिए मुल्तान इज फेवरेट अगेन. मुल्तान की हमने प्रीवियस में भी बात की थी, काफी स्ट्रॉन्ग इनका लाइनअप है. रिजवान, शहजाद, मलान, इफ्तिखार, खुशदैल. So they have a strong batting lineup definitely. Bowlers भी इनके पास, Tahani, Abbas Afridi did really well in the last tournament. So they have a good, well-rounded team, I think. Karachi Yeah. with again all the overhauls, with people like Shoaib Malik, Shan Masood in the top 4. I think I see them struggling a bit. Yeah, I mean, a lot of people who perhaps a few years too late, also the wrong kind of player. So, I mean, let's see.
But Karachi, like we said, मुझे तो top 4 में इनका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. But हाँ बिल्कुल I agree with. good stuff. Thank you for being on the show, Imran, and Thank we'll you, have you Faris. again soon. Those of you watching, we'll be back after tonight's game to talk about today's games. In the meantime, stay tuned to the shiny side.